So welcome back to all of you. आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 एंड दैट इज क्लोरीन. तो क्लोरीन हाईली रिएक्टिव एंड हाईली इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. इसकी प्रिपरेशन को अगर आप देखें तो इन लैबोरेटरी इसको बनाया जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड विद sodium chloride and sulfuric acid. So that product here is sodium bisulfate plus manganese dichloride plus chlorine and water. So that is one of the method used for lab preparation of chlorine. Another method जो use किया जाता है इसके preparation के लिए in laboratory, that is from potassium permanganate. Potassium permanganate when treated with hydrochloric acid. तो potassium permanganate अपने oxidizing behavior की वजह से ये hydrochloric acid को oxidize कर देता है to chlorine. So that the product here is potassium chloride plus manganese dichloride plus chlorine and water. और अगर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करें, मैन्युफैक्चर की बात करें, so it is manufactured either by the process known as Deacon's process. Deacon's process जिसमें इसको रिएक्ट कराया जाता है is a reaction of hydrochloric acid with oxygen in presence of copper chloride. So यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ 743 Kelvin, so that your product is water and chlorine. या फिर it is also produced as a byproduct in chlor-alkali process. तो आपको याद होगा क्लोर-एल्कली प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है ब्राइन सॉल्यूशन की. ब्राइन मीन्स एक्वस NaCl. So aqueous solution of sodium chloride is electrolyzed so that chlorine is produced at cathode, hydrogen is produced at anode, and sodium hydroxide is produced in solution. So that is the chlor-alkali process, right? So these are preparation methods used for preparation of chlorine. और अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज अ पेल येलो green pale yellow gas, or you can say it is a greenish yellow gas which is highly soluble in water and quite reactive in nature. So because of its high reactivity, it reacts with almost all metals and non-metals to form their respective compounds. So if we consider the properties of chlorine, so first of all,
reacts with almost metals and non-metals to form their respective compounds. For example, it reacts with magnesium to form magnesium chloride. Similarly, it also reacts with aluminium to form aluminium chloride. Non-metals की बात करें, it reacts with hydrogen to form hydrogen chloride, right? It also reacts with carbon to form carbon tetrachloride. So many reactions of chlorine you can observe. And another important property is its oxidizing character. So it is a strong oxidizing agent in aqueous solution. So in aqueous solution, it liberates nascent oxygen, and due to liberation of nascent oxygen, it is acting as oxidizing agent. For example, it oxidizes ferrous sulfate to ferric sulfate. So ferrous sulfate gets oxidized by chlorine in presence of sulfuric acid in acidic medium to give you ferric sulfate along with hydrogen chloride. Similarly, it can oxidize sulfides to sulfates. Sodium sulfide is oxidized by chlorine in aqueous medium, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलता है sulfide is oxidized to sulfate, sodium sulfate along with HCl, right? इसी तरह से आप रिएक्शन बना सकते हैं for oxidation of iodine to iodic acid. तो ये कुछ रिएक्शंस हुए जो शो करते हैं क्लोरीन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जो हमें मिलता है इन एक्वस सॉल्यूशन. एंड अनदर प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन इज इट्स ब्लीचिंग एक्शन, और इसका ब्लीचिंग एक्शन इज अ परमानेंट एक्शन विच इज ड्यू टू इट्स oxidizing character. So because of its oxidizing character, it shows strong bleaching action, और ये bleaching action जो है ये कैसा होता है, it is permanent. Another important property of chlorine is its reaction with ammonia. So with ammonia, it gives you different products depending upon the relative concentrations of ammonia and chlorine. So if it is ammonia which is in excess, so 8 molecules of ammonia react with 3 molecules of chlorine, और इस रिएक्शन में नाइट्रोजन इवॉल्व होती है, नाइट्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड along with formation of ammonium chloride. और अगर यहाँ पे क्लोरीन इज इन एक्सेस, say if it is the reaction of 1 molecule of ammonia with 3 molecules of chlorine, so that chlorine is present here is in excess, so product is nitrogen
ट्राइक्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर अमोनिया एक्सिस में है तो आपको प्रोडक्ट मिलता है नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड, और अगर क्लोरीन एक्सिस में है तो प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. Similarly, it reacts with alkali, और alkali के साथ भी आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन. So if you observe its reaction with alkali like sodium hydroxide, chlorine reacts with dilute sodium hydroxide in cold medium, so that product here is sodium chloride and sodium hypochlorite. तो यहाँ पे आपको क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन मिलता है. और इफ क्लोरीन रिएक्ट्स विद hot concentrated sodium hydroxide, and if the temperature is high, then the product is sodium chloride and sodium chlorate. So you get sodium chloride and sodium chlorate along with water. Another important reaction is its reaction with dry slaked lime. तो अगर ड्राई स्लेक लाइम के साथ इसका रिएक्शन आप ऑब्जर्व करें तो इन दैट केस व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर ड्राई स्लेक लाइम आपको पता है इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यू गेट a mixture of various compounds and that all mixture is what it is bleaching powder. प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, और ये पूरा मिक्सचर इज बेसिकली द एक्चुअल कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. And another important reaction of chlorine is with hydrocarbons. So it gives substitution reaction with saturated hydrocarbon. For example, methane when treated with chlorine in presence of sunlight, so you get mixture of chloromethane, dichloromethane, trichloromethane and tetrachloromethane. So one by one hydrogens will be replaced by chlorine. और अगर आप बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो उस केस में आपको एडिशन रिएक्शंस मिलते हैं. तो यू कैन से इट गिव्स एडिशन रिएक्शन विद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स.
For example, ethene, when treated with chlorine, so there is addition of chlorine across the double bond and it is converted to 1,2-dichloroethane. So in that case, your unsaturated hydrocarbon is converted to saturated hydrocarbons. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हुई क्लोरीन की. और अगर आप क्लोरीन के यूजेस के बारे में बात करें तो इसको हम यूज करते हैं फॉर ब्लीचिंग पर्पस, जैसे फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प जो पेपर और टेक्सटाइल फाइबर्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है. इसके अलावा इसको यूज किया जाता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स लाइक गोल्ड और सिल्वर में इसको यूज करते हैं. आपने पढ़ा होगा मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस जो हम यूज करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. तो उस मेथड में क्लोरीन इज यूज्ड. अदर देन दैट इट इज यूज्ड एज इम्पॉर्टेंट क्लोरीनेटिंग एजेंट और कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे DDT, फ्रियॉन या क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरह के कंपाउंड्स बनाने में यूज किया जाता है. इसके अलावा chlorine is also used as an important chlorinating agent in number of organic reactions, right? So that is all about chlorine. और next lecture में हम लोग discuss करेंगे compounds of chlorine. Goodbye till then.